यहाँ ये एक 1.7 मेगाहर्ट्ज़ का 25 का पीजो इलेक्ट्रिक ह्यूमिडिफायर है, एटोमाइज़र है, और ये वाटर एटोमाइजेशन के लिए बेस्ट है। अंडर वाटर ये सबमर्जेबल है, अंडर वाटर ये वर्क करता है, और ये 24 वोल्ट की पावर सप्लाई है और इससे ये ऑपरेट करेगा। जिसमें इसके लिए हमारे पास पानी की एक अमाउंट मौजूद है। इसके अंदर हम इसको सबमर्ज करेंगे। और इसके देन हम कनेक्ट करेंगे 24 वोल्ट की पावर सप्लाई से, लाइक दिस। और अब हम इसको ऑन करते हैं। ये देखें अच्छी खासी अमाउंट मिस्ट की निकल रही है, लेकिन एट द सेम टाइम साथ में एक फाउंटेन भी मौजूद है, वाटर फाउंटेन, और ये हमारे सिस्टम को अफेक्ट करेगा। इसको हमने किसी वे में ड्रॉप करना है। लेट्स डू इट। बड़ी बेहतरीन वेस्ट फॉर्मेशन हो रही है इसमें, और इसको अगर एयर के साथ कंबाइन किया जाए, मिलाया जाए हाई स्पीड एयर के साथ, तो बड़ी इफेक्टिव कूलिंग हासिल की जा सकती है। और हम अभी ये करेंगे, एक छोटा सा मिनी एयर कूलर बनाने की ट्राई करेंगे। अभी हम ये हमारे पास एक बॉक्स है, कंटेनर है। हम ईजीएस्ट मेथड यूज़ करेंगे इस एवेपोरेटिव कूलिंग मशीन को बनाने के लिए। और ये हमारे पास एक 3 एम्पेयर का 12 वोल्ट 3.6 एम्पेयर का ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक हाई स्पीड फ़ैन है। इस फ़ैन को हम इसमें फिट करेंगे एक साइड पे, और इसके अंदर इसको ह्यूमिडिफायर को लगाएंगे, पीजोइलेक्ट्रिक ह्यूमिडिफायर को। और यहाँ पे नीचे हम इसके डक्ट्स बनाएंगे, जहाँ से जो हाई स्पीड एयर है वो जब नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेगी तो वो यहाँ से पहले एयर को सक इन करेगी, और वो जो एयर है, सक इन हुई एयर, वो अपने साथ एटोमाइज्ड पार्टिकल्स को, वाटर पार्टिकल्स को लेकर ऊपर सक इन हो जाएगी मेन स्ट्रीम एयर के अंदर, हाई स्पीड एयर के अंदर, और वहाँ पे एवेपोरेशन होगी इसकी हाई स्पीड के साथ, और ये इसकी कूलिंग इन्हांस करेगी। तो इसको पहले हम इसका लेआउट बनाएंगे।
zip ties. On the other side, I will make another hole with it and put the delivered air to this side. अभी ये हमने एक फ़ैन इसके सामने लगा लिया और ये 3 एम्पेयर का फ़ैन है, 3.3 एम्पेयर का 36 वाट और हाई स्पीड फ़ैन है। अब इसको ये है कि क्योंकि वेट इस साइड पे ज़्यादा हो गया है, हमें इसको फ्रंट साइड से टाई अप करना पड़ेगा, यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा और इसके अंदर हम अपना एटमाइज़र लगाएंगे, फिट करेंगे और इसको पावर सप्लाई दे के फिर हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट करता है। हॉट ग्लू को यूज़ करके हमने इसको सेंटर में एडजस्ट फिट कर दिया अपने एटमाइज़र को और अब इसको हम प्रॉपरली किसी प्लेस पे होल्ड करते हैं। इस टाइम टेम्परेचर हमारे इस कूलर का 31.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पे हमने इसका ये सेंसर लगाया, थर्मिस्टर लगाया है, अंदर हमारा ये गैजेट मौजूद है, एटोमाइज़र मौजूद है और ये हाई स्पीड फ़ैन है। अभी इस हालत में इसको हम चलाते हैं तो देखते हैं कि टेम्परेचर ड्रॉप कितना होता है विदाउट एटोमाइज़र। इस टाइम पे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बाहर का 30.9 डिग्री सेंटीग्रेड है। टेम्परेचर 30.6 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया है। अब हम इसको डिफॉगर इसके साथ लगा के एटोमाइज़र लगाते हैं, इसको ऑन करके फिर चेक करते हैं टेम्परेचर कितना ड्रॉप। ये एटोमाइज़र को ऑन कर दिया, 29.3 ड्रॉप होने की हो चुका है टेम्परेचर, 27.9 6.9 getting down. यहाँ पे हमने सिर्फ सिंगल एटोमाइज़र लगाया है, फैन की स्पीड को थोड़ा सा हल्का करते हैं।
और ये 30 to 25.2 डिग्री तक इसकी ड्रॉप करती है। ये सफिशेंटली 4.7 डिग्री का ड्रॉप है, दैट्स फाइन। अब हम फैन को ऑफ करते हैं, देखते हैं कि मिस्ट कितने निकल रही है। एटमाइजर अच्छी खासी एटमाइजेशन कर रहा है। Okay, so guys, this is a great concept about a desert cooler, air cooler, and we are using at this time only single small atomizer humidifier.